The can you spend another 10 minutes here? 15 minutes. Okay. You see, the action dynamics says that, look here. Suppose in a laboratory, I am making some chemicals. There is some blending, and the scientist in the laboratory knows what will be the reaction, isn't it? So in nature, every cause has its effect, and there is an action-reaction dynamics. Okay. Before operation, if you are given anesthesia, then the doctor who is administering anesthesia knows that after 2 minutes you will go into soon, so they can operate, isn't it? So in nature, there is a cause-effect dynamics. In a domain of action also, as is the action, so is the consequence. If you kill somebody, certain consequences are awaiting. If you heal somebody, help somebody, certain consequences are awaiting. Number 3, by doing the action, you attract the consequence of action. Sooner or later, this is the law, karmic law. Now Lord Krishna says that a person who doesn't have desire for action is not bound by action. Am I alright? The point is, why I am, you see, action, action, reaction, action. By doing the action, you are bound to fall into karmic bondage, which by reaction will come to you. But there is a secret of doing the action without attracting the reaction. What is that? Now, why do you attract the reaction? Because it is your action. Be very, this is going very, I don't know how many people are getting it. You see, when your son gets into best 10th or the first 10, you are happy because it is your son. When you give a good speech, you are happy because it is I who gave a speech. It is mine. So always the action goes with a sense of I and mine. It is my house. It is my degree. It is my book. If you fail, you are unhappy. So happiness and unhappiness goes with the sense of success and failure. Why? Because you own the action. Okay? Suppose there is some technique by which you don't own the action. So if you don't own the action, you don't own the consequence. I will give a concrete example. Suppose you are a master of a house, and on Sunday you decide, आज मांगर गोटे दिन, आज वो नारायण सेवा करेंगे. नारायण सेवा केवल लगे जितने सब दरिद्र अन्न सब डाकिबा. दरिद्र अन्न खाई के आशीर्वाद कले. कहले जाओ ये लोकटे कला बहुत भल करे. कहा हु इज क्रेडिटेड? सर्वेंट. मालिक किछि करूनी. मालिक बसिछि. He doesn't do anything. He gets everything done by his servant. से सर्वेंट को अन्य कोड़े काम पठै थांदा तो ना तू आज रही कि एटा नारायण सेवा करदल. तो नारायण सेवा करिवार जो क्रेडिट एटा कहार एजेंट के जो लोक पैसा खर्च कर जो लोक ये से तो दरवा होछ ना. ए काम करे भी दरवा होछ ना. सो द सर्वेंट डजंट हैव एनी रूम टू से आई हैव डन इट. जो सर्वेंट को जा नारायण सेवा करदल को ना बाबू को पे खेलना से इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे करूची. तेनु तार खुशी होवर नाही कि तार बदिए करिवार किछ तार से खुशी हबार नहीं कि दुख कर कारण सी तो एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ ना. मास्टर काम भी कामटा करूछ ना. तो भल धर तो सेटा खाई कि गोटे लोक झाड़ा हो गला, डायरिया हो गला, पुलिस आस ताकू डाक बांधी तो मु कौन करी मत काम ये मत बांटिया पे देला लोक डाकिले परिसी देली. सी कौट आनी कौन कर पचार ना. तेणु भल हेले मोर बहादुर नबार ना कि खराब हेले मैंने व्यस्त हबार ना. मत दिखाई तू ये कामटा कर. जदि कौन लोक कामटा को निजक इन्स्ट्रुमेंट भाविक करे से कामटा को ओन कर कामटा जो ओन न कला कन्सिक्वेंस ओन कर. तेणु श्रीकृष्ण कहते युद्ध कर निमित्त मात्र भव सभ्य साची. तू निमित्त भाव काम कर हेले कौन हवा तू भाव यू आर प्रॉक्सिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द डिवाइन. अर्जुन हैज टू थिंक दैट दिस इज धर्म युद्ध एंड ही इज द एजेंट. आई एम ए मियर इंस्ट्रूमेंट. कि मन रखता इंस्ट्रूमेंट है मत तार शक्ति प्रयोग करनी कि शक्ति गोटे सर्वेंट काम कर सिंसियरली काम करूनी कि तार एजेंसी अच्छी कर्तव्य अच्छी किंतु आई एम ए कर्ता इन सो फार एज आई एम हिज इंस्ट्रूमेंट. सो अर्जुन हैज टू मस्टर ऑल करेज, all skill archery to defeat the Kauravas, but all the while it is uppermost in his mind that I am fighting on behalf of the divine. Number 2, I am fighting not for my personal glory but for Lokasangram, for collective well in dharma yuddha re dharma pai mu karuchi amar parivar pai kare. ता भीतर कोन हला मु जानि
आई एम सो यू हैव जेतेबेले आपण एक्शन टाको निजर बोल भाबिबे सेतेबेले आपण सफरिंग एंड प्लेजर डुअलिटी विदर रहबे सुखे सो बिगे तो सुख दुखे जो केतला आसीबो जेतेबेले यू थिंक दैट अच्छा आपण पिला को पाले आपण ने केत लोक माने केमिति माने जन्म हला पूर्व डून स्कूल रे पिलांकर लाइन लगाबो माने कोटे हबो वो पुणी बाहा हबो पुणी बाहाले पुणी नाती रे पुणी कोडी पडियो ये होइना विशेष किंतु गोटे आश्रम रे गोटे झियो बाहा न होइगिरी पिला पालुची सी पिला पालुची ये पालु जो पंजाब जा एका सी रात्रि रे सोनी भी रात्रि रे सोनी किंतु ये जाउची एटा होची भगवान के काम बोले होई करची किंतु सेठी एटा मो पिला the second one will lead to further bondages पुओ हे गेल नै पुओ भी गोटे मैच देखिबी जे भलो पाठ पढिबो कोठी चाकरी पाइला नै बड नै बसिबो तापर तार नातीटा हला पुओ बहुत दी जण चाकरी करचोंती झियोटा केमति पढिबो झियोटा केमति भलो स्कूल जिवो आज पढि गेला तार देह खराब होला हॉस्पिटल लगी जा चाहू सेकंड चाइल्डहुड विल कम old age will come so the third question answer is you see Lord Krishna is simply unfolding the dynamics of an action where you act but you are not bound. How why you are not bound? Why you are bound? Because you have sense of owning. You disown it, disown your action. Think that everything I am doing on his behalf, so you are free. So you perform action, you are not bound. Second, you see, when Lord Krishna is trying to, lay down alternatives, of course, he is encouraging it. He is encouraging him for good action. Don't you feel that if something is good, your child should be indoctrinated? There is nothing in indoctrinating good. There is nothing in taking more and more balanced diet, isn't it? As it is true of the physical plane. So Lord Krishna is trying to prevail on Arjuna. He is trying to bring out the good sense in Arjuna, because good sense is prevalent in everyone. गोटे कथा खाली डाइवर्सन खाली कहबे अपन प्रति मोर नबे अल्बर्ट स्विजर बोल जण अछंती से कहचंती जे पृथ्वी रे जे सबुटु बड़ डकायत सबुटु घृण्य हु कैन किल समबडी फॉर अ पिटन्स पांचटा जानजे ना नहीं कोन सब लोक अछंती बुलुचंती आपण ताको 100 टका देबे वो एटा मार दो जे जाबे करदो कारण तापि 100 टका इम्पोर्टेंट अल्बर्ट स्विजर कहचंती पृथ्वी रे जे सबुटु घृण्य लोक सबुटु बड़ा dreaded criminal of the world जेतबे से घर को पळे आउची when he comes home he is patting his pet तार जो पोसा कुकुर को एमते आउस तार पिलाटा को is taking on his lap जहा को जदी काहा से भलो पाउ दे ताबी सब त्याग करता जीवन त्याग कर राजे जी तापर स्नेहट आसला कोठी if is all bad all evil where is the fund of love that he has गोटे कथा में गीत नै ओडिया रे श्रुति तमे पाउस दलर निया किंतु समस्त भीतर divinity is lurking. Even the greatest criminal also has that goodness dormant in it. You have to arouse it. कहा भीतर explicit कि आगे रचे कि पछरे रचे. So we are all four travelers in one path. So Lord Krishna is not compelling him. He is definitely inducing him. But there is nothing wrong in inducing the heroism in him because the Dharma Yuddha is awaiting. It is a momentous war where the scores between good and evil will settle. So if he is inducing him to do a good thing, nothing immoral about it. The first question, I am going in the reverse order. First question is, you see, entire moral judgment among the legal system, a legal system based on one presupposition that man has freedom to act in one way rather than another. देखो, गोटे particular circumstances, जन लोग मर्डर कला बर्तमान कष्ट कहला पनिशमेंट दिया गला काई पनिशमेंट दिया गला कारण से मर्डर न करी कि अन्य किछि करि परथांता देयर इज चॉइस the whole system of reward and punishment which constitute the domain of morality is based on ताको हमरा रिवार्ड काई दउचंदी ना सिटी को धरि परथांता से परिश्रम करिते बढ़िया काम करिछि अपना ब्रेवरी अवार्ड काई दउचंदी कारण से जो पिलाटा बुडी जाउतला आ गोटे पिला ताको जाई निजर लाइफ he has staked his life and saved the child. He could not have done it. He might not have done it. बुझु नहीं अपन जो ब्रेवरी अवार्ड ता दिया जाउची जड़े लोक निजर लाइफ ता को by risking his own life the child is saving another. You are giving a bravery award. Why? Because many people they don't take the risk. He had a choice also to join those who didn't take risk. जो पिलाटा गोटे पैन बुडी जाउची आ गोटे पिला सेव करूची
बाबा डकायत आसुची से निज लाइफ टाको ये कर दे कि जन सेव करू निज खंडिया में ताको हाथ गोड़ काटी दउ ताको गोटे अवार्ड दिया होची कारण अवार्ड काहे दिया होची ना तार क्लियर चॉइस थिला से साधारण लोक में एक्ट करियो बोली से साधारण लोक में एक्ट करी नाही he has acted in an extraordinary way and a positive way that is why he is awarded cut off his hand why he had a clear choice not to join the group of terrorists बहुत असुविधा थिला तो दारिद्र्य थिला तो कसब एमान तो टेररिस्ट माने पैसा हम सुनि जने कसब हिस्ट्री ताको माने पैसा देके दैथिलु तो बहुत हाई जते इवन ह्यूमन बॉम्ब्स कसब had a clear choice not to join the terrorist gang कसब ताको पनिशमेंट काय देले कारण पॉवर्टी रे पडिले समस्त चोरी करे बाध्य कदा किछ नाही जानना नहीं the great man it's a commonplace thing they said that a poverty can create a criminal as well as a great saint but a extreme poverty situation रे जण लोक क्रिमिनल हे जे पारे जण लोक मत ग्रेट डिवोटी हे जे पारे हिस्ट्री इज विटनेस तो पॉवर्टी हला जे बोली जे मु चोरी करबी it doesn't follow जदि पॉवर्टी हेले लोक चोरी करता तो समस्त चोरी करते ताले चोरी करियाटा को हमें पनिशेबल क्राइम कहि न पाबे चोरी is a punishable crime because given that situation you had a clear choice you had a clear freedom not to steal there are other ways of earning also as well there are many people who are in poverty but by their innovativeness by their involvement by their sincerity and hard work they also get rid of poverty they overcome poverty so Kosovo is jailed because their choice is open तो entire system of reward and punishment एटा केवल मनुष्यर freedom of choice ऊपर डिपेंड करू सेही सका से जदि आपण कहा मर्डर करछथि आपण प्रमाण कर देबार आपण पागल बोली you'll not be sent to the jail well you'll be sent to a pathological ये asylum माने asylum आपण रांची पठेबे यूनिट ट्रीटमेंट कारण जहा करछथि ताहा विथ फ्रीडम करनांती विथ माने कॉन्शियसनेस करनांती इट इज ए पैथोलॉजिकल स्टेट जदि छोटो पिलाटे घरे लुगार निया लगे देला आमे छोटो पिला को ब्लेम न करी तार मां को ब्लेम कर काय रखि देला डीबी सेठी सी कोन जानि जी यू डोंट पनिश ए चाइल्ड बर्तन द लॉ इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड ये जो जुवेनाइल एक्ट इज गोइंग टू बी काई जानछन त 12 14 वर्ष रो इंडियन पिला माने दे आर एंगेज्ड इन दिस रेप्स एंड ऑल तुम जदि आपण लिमिट कर दे 14 वर्ष तक को हम जुवेनाइल बोली कहिबो ताल ए दिल्ली जो झियोटा ये हला बर्तन ही डजंट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ बिकॉज़ ही इज अ जुवेनाइल तार द डेट ऑफ बर्थ खाउ so they are trying to our lower age तक lower कर दे बोली चाहू कारण बर्तन क्लास 10 15 रे 10 12 वर्ष मध्ये ई प्रकार रेप्स एंड क्राइम्स आर देयर so the entire legal system is based on the presumption is enforced and enacted and enforced on the presumption that man has a freedom to do good and bad if you do bad you will be punished if you do good if you are forced to do what you are doing you are no better than an animal you don't have freedom you are not a holder of freedom सेतिक बेले आसीबो जेतो एटा न करी कि सेटा करि परता सेटा न करी कि एटा करि परता नहीं देन ओनली द रिवार्ड एंड पनिशमेंट आसी आपण जदी पठे कहि देबे जे आपण जदी लॉ कोर्ट जे बोबेबे कुकुर बळिया कि वकील माने सिखात नहीं कि you behave like a madman you will not attract the provisions of law because you don't attract you are not a moral agent you are a pathological case काहे moral agent नोंती ना आपण भलो मन चिंता करिवार डिसीजन न मेकिंग कैपेसिटी नहीं choice नहीं freedom नहीं am I did you get me sir I just want to ask a question very minor question it's related to action as you said that let me say that action is related controlled most of the times by psychology you have discussed the whole thing in relation to the legal culpability. I'm not coming to that point. Whether somebody is a criminal, whether he is legally culpable or he is not legally culpable, that's not my point. But the thing is that any action is preconditioned by psychology. That's what I found. I don't know. Because, for example, somebody who is very, very frustrated, you take the example of somebody who is very, very frustrated, sometimes even though he doesn't have that instinct to commit any violent act, still he goes and he commits violence because it is the result of frustration. Many people, those who are frustrated, they commit violence, and that is the action which is related to psychology. So many things in our life, many action, they are controlled by psychology. But I say you one thing,
that I am not talking about the legal culpability of the action. That part I am not talking about. I am just talking about the behavior of a man and how a man behaves in particular situations Yes. and the particular action. Now, what do you want to say about Yeah, that? I could You get just it. don't No, say about the culpability. No, I understand. From your second sentence, I could understand what you are driving at. To see, it's a fact that I'll just instantiate with the example. Suppose I give 20 rupees to a boy or 1,000 rupees a person. If somebody donates it to a charity, somebody donates it to a terrorist fund, somebody saves it, somebody shares it with, for selfish pleasure, somebody shares it with his friends. 5 options. You are definitely right that why does a person contribute to a terrorist fund? Because he has been marginalized, he has been deprived, he has that psychological setup. That is why you support the terrorists. Here is a person who is born in a spiritual ambience, that is why he donates to a charity. So it is a fact that not only your psychological conditions, your physical conditions also. Bhuvukhitanam ki nakaroti papam, khinajana niskaruna bhavanti. If a man is hungry, he can commit a crime. Normal, had he been normal, he would not have done it. ଆପଣ ସୋ ମୋରେ ପତ୍ର ଆମର ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ନାହିଁ ସୋ ମୋରେ ପତ୍ର ପଢା ହଉଥିଲା ଗୁରେଇ ତା କହୁଛି ସେ ଅପରତି ଗୁରେଇ କଲେ ତୁ କଣ ଲୁଗା ଦେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଚୋରି କଲୁ ନା ମୁଁ କଣ ଚୋରି କଲି ବଡ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତୋର ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା କଣ ଚୋରି କୁହାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ତେଣୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇ ପାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାର ମୋରାଲ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ पण एकता कहू चाहूछन तो केवल साइकोलॉजी आल्सो डिटरमाइंड बाय फिजिकल ड्राइव्स आल्सो ग्रेटली तुम आपण को सोशल एम्बियंस फैमिली अपब्रिंगिंग योर फिजिकल कंडीशंस और योर साइकिक स्टेट व्हाटएवर दैट आल्सो डिटरमाइन योर चॉइस इजंट इट यस इट्स अ फैक्ट cannot be disputed but nonetheless man on account of having a capacity to reason has the capacity, built-in capacity to overcome the temptations, to overcome the limitations of the circumstances and act in the way he desires to act. If you don't accept it, then you can neither blame anyone, whatever man's action will no better than an animal events. या हेला बोली या हेला या हेले मध्य मरा कइरा कहली जणे लोक दारिद्र्य रे मध्य भलो कवि ही पारे गोटे दारिद्र्य रे पड़ी गोटे लोक बहुत डिवोटेड भगवान जहाँ नहीं सब तो नारायण आउ एवं किस छड़ाइब लक्ष्मीकांत महापात्र लेपट से गाँव बाहर कर देख जोड़े इन्स्टान्स आप बुझीपारे पुरी थोड़े आसला बेल जो लोक देख से बईटार लगी करम बईटा मुझे भाई ना ये मुझे जानी स्त्री मरी जाता पुटे मुझे आसला कहली पुओ केमती अच्छी कांदरा सार जगन्नाथ छड़े नेले पड़ा जगन्नाथ देखिले जे पुओटा अच्छी तो छड़े नेले सब संपूर्ण भाव प्रति देखो पुओटा स्त्री चलीगला ओनली सन चलीगला से जगन्नाथ को विश्वास करा कथा नुहे तुम देला एटा केमती हला कि तार विश्वास बढ़ी जाऊँगी जे जगन्नाथ एटा छड़े देले आ गोटे केस मो जीवन अनुभूति आ गोटे केस ये जो क्राउन होटेल पाखे से एफसीआर हेडमास्टर थे एत भल लोक एत रिलीजियस स्त्री मत डाकिले कहले सर आप गोटे पर्टिकुलर हिलिंग दि जाए कहले सर मोर गोटे बुझीपार तो पिला दिन ठाकुर आम परिवार समस्त ठाकुर आश्रित ये तो सब दरमा गुड़ाक जहाँ या मतलब लुचेक पिला दरमा दे दिखते ये कर केवे कहार अनिष्ट करना कहीं यार उत्तर मुझे जस्ट शुणी गले आप जिन करेंगे कि ये कले आम हिलिंगटा दबा मुझे भाविक आसी जस्ट रोड आपर आसला बेलू कहले सार बाबा चली मुझे गला बेलू सी मूर्ति जगन्नाथ मूर्ति सब छिन छत्र कर भांगी भोगी से युवा को सब कर देखो गोटे सिचुएसन तार पुओटा मरी जाऊँगी से कहूँ जगन्नाथ छड़े माने हिज बिलीव इन जगन्नाथ इज गेटिंग कन्फर्म गेटिंग स्ट्रेंथेन्ड एनरिच्ड नरिश्ड एठी सेही सिचुएशन रे से गोटे एथिस्ट हे तेणु सेम सिचुएशन रे जने लोक मे से दैट इट इज गॉड हु हैज डन इट व्हाटएवर मे बी द सर्कमस्टेंसेस एंड सेम सिचुएशन रे गोटे लोक गॉड इज नॉट देयर गॉड इज नाउ हियर गॉड इज नोवेयर जो एन डब्ल्यूडब्ल्यू के पड़े तेणु गोटे मनीष मैन तेणु मनीष मैन इज नॉट ए विक्टिम ऑफ सिचुएशंस
Why? Because he is endowed with a reasoning capacity. मनुष्य चाहिए माने आपण तो से सुसाइड कर देला हां फ्रस्ट्रेशन কিন্তু बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन बेले मध्य सुसाइड न करिक मते ओवरकम करजती तो एटा हमें अज्यूम कर नउ जे एंड इट इज ए फैक्ट दैट मनुष्य भीतर से संभावनाटा अछि से तार साइकोलॉजिकल कंडीशंस फिजिकल कंडीशन ओवरकम करिक मध्य से जोटा डिसाइड करि पारिबो एवं चाहिए he can be also victim of circumstances जदि विक्टिम हेगला रीजन टा को यूज न कला सेटा इज ब्लेम वर्दी जदि सेटा को ओवरकम कला इज प्रेज वर्दी तो मनुष्यर से बिल्ट इन कैपेसिटी इनहेरेंट कैपेसिटी अछि टू ओवरकम टू कंक्लूड द डिटरमिनेशंस ऑफ द फिजिकल कंडीशंस these determinations of the psychological conditions and act in the way he deems fit rationally fit sir good sir ha ko for this just part koile the man has no control over his desire and fear therefore he is not a human he cannot be called let me help you to understand there are three people it's a social scientist there are three people in the history of human society, history of human thought, who are responsible for confusing humanity and degrading humanity. One is Darwin, second is Marx, third is Freud. जो डार्विन गोटे कहले जे गोटे जेलीफिश रो मनुष्य तयारी हो तो मनुष्य रो डिवाइन ओरिजिन नाही लोक क्वेश्चन करले तापर सब हमर ये बाहरला ना एज ऑफ रीजनिंग बाहरला 18th सेंचुरी 1860 डिसेंट ऑफ द ईयर मार्क्स कहले मनुष्य जहा किछि करूजी सब इकोनॉमिक कंडीशन द्वारा डिटरमाइन होची इकोनॉमी इज सब स्ट्रक्चर as is the mode of production and distribution so is your religion so is your politics so is your social behavior man religion is an opium man lives by bread economic activity is the most important activity which marks of presumption तो मार्क्स भूली गले जे मनुष्य sorry let me address Marx first ना मनुष्य खाइबा पीबा सब हे गला परे मनुष्य आउ किछि खोजे man is a physical being he needs bread but man is not only physical being he is also psychic being truth इंडिया रे सब लोग टकी के चाव दे देला परे मध्य सोसाइटी रे गंडगोल हे पारे धर्म ना रे रिलीजन ना पारे धर्म ना रे भाषा ना रे विभिन्न ये रे हे पारे एरिया कटिक ओवर से गंडगोल हे पारे psychic differences can be bridged करी she call yes economy is a basic thing no doubt about it but it is not the only thing and it is not the only pivotal point अब जानि छु मदर टेरेसा को जते बेले 79 रे रिसेंटली उसके भी सर अब का नोबेल प्राइज दिया गला सिस्टर्स विथ आइडिया कल मदर you have got Nobel Prize it is a great recognition for our organization mother will know the poor have been recognized Person let us celebrate yes let us go and pray 1 minute prayer तापर कहले let us go for work Nobel dinner दिया गला कहले मदर यू आर Nobel committee dinner दिया very very sumptuous dinner for all केते Nobel laureates आस्ते सेटिक स्वीडन रे स्वीडन किंग तक होस्ट करते मदर कहले I don't take outside moreover I take food with the children मदर जतले ऑक्सफोर्ड रे हिथ्रो एयरपोर्ट रे ओलौचंती से ठिया आइछंती तकर सब अपेक्षा करछंती तो मन लॉन्ग बैक मिशन चार्ट सेतला आरंभ होतला तो ओलौचंती भाई वेटिंग ना मदर योर लगेज नो दिस इज माय लगेज वन हैंडबैग एंड बाइबल एंड दैट इज माय लगेज का भी वर्ड करछ एटा तो मोर लगेज ताको जण पचारछंती मदर इज देयर गॉड तुम चाहो do you know that I came out of the Loreto convent with a Bible and 5 rupees in my pocket and a canvas bag now there are 500 centers every child is given what he or she needs who has given it if God is not there look at the reality so the point is man is never a victim of circumstances मोर खाइया को मिलना जे चोरी करबी जदि एटा गोटी मात्र अल्टरनेटिव हेई थांदा ताले चोरीटा पनिशेबल ऑफेंस हेई न थांदा तू भोकर रहिले भी चोरी काई करलु तोर अन्य कोन अल्टरनेटिव नथिला पृथ्वी रे अन्य कोन तो अल्टरनेटिव थिला तो जदि भोक हला माने लोक चोरी करछि भोक हला माने चोरी करछि ताहले एटा लीगली ऑफेंस नै सो रिवार्ड एंड पनिशमेंट रहउछि बिकॉज़ मनुष्य भितर से कैपेसिटी अछि मने तको अराउज करिवो ताहले मध्य
ता भीतर गोटे नोबिलिटी गोटे ये माने ही कैन ओवरकम द डिटरमिनेशंस. That is why we cannot say, but an animal is a victim of circumstances, not a man, because he has a developed mind. किंतु जो माइंड बଳରେ मनुष्य ओवरकम करिवो से माइंड टाको जदि आपण इट वर्क्स रिमेन्स एट द सर्विस ऑफ योर इंस्टिंक्ट, man becomes worse than a beast. Few days back I was in Visakhapatnam in a connection with seminar. Say दिन front page news ହେଲା हमरो 5 वर्ष झियो को आई बीन सोईथिला हम नहीं रेप कर दी. It's a human possibility. Animals don't have greed, animals don't have to overeat. Animals never go against the laws of nature. It is man and man alone who can go against the law of nature because he has the freedom. That is why spiritual plane it is said animals always grow higher and higher. There is no possibility of downfall because they are growing by the attraction of the cosmic nucleus. But it's a man who can go faster toward the goal. That is also a way. But if the freedom is misused, he can behave like a beast. But when he behaves like a beast, he becomes more dangerous than a beast because he is intelligently beastly. There is an intelligent dimension to his beastliness. There is an intelligent dimension to beastliness. मनुष्य जो पशुपत आचरण करिवो से पशुठार आउरी भयंकर हेइ जिवो तार आर्टिफिशियल टूल तार इंटेलिजेंस अछि. दिल्ली रे धरा पड़ला गोटे दुबई रे गोटे डेड बॉडी आसला तार पेट देखला कि खबर देला तार सिलेई ता चरस पछी डेड बॉडी भीतर चरस का स्मगल मनुष्य करूची. ये सब गुड़ा तो इंटेलिजेंस रे डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस. सो मैन हैज अ फ्री चॉइस. आइदर ही कैन ग्रो इनटू a nobler dimension or he can be devil worse than a beast. That's a choice. And after the devilish way you will pay price for it. That will again push you to the right way. So right way or wrong way, that will always, one is direct route, the other is indirect route. You are free to flout the rules of health. आपण मन इच्छा खाऊ नांदी एमदी गोटे समय आसीबो जेतले किछि खाइ परिबे नाही सब मना हे जिवो सेते बेला आपण लोकन उपरोज देख देख तू बेसी उडा खा ना. So a old patient becomes a good counselor of health because he has learned the rules of health by violating the rules of health. तो मनुष्य कथा अधिकांश मनुष्य पृथ्वी रो भूल करी सिकंदी डिफॉरेस्टेशन परे नेसेसरी आफ्रेस्टेशन प्रोग्राम आरंभ हुए. आफ्रेस्टेशन प्रोग्राम तो 50 वर्ष आगु नथला कारण जंगल बहुत थिला. जंगल नष्ट कला परे एक्सीडेंट परे हम तैयार हुए. एटा होची नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नानी मनुष्य गोटे स्लो लर्नर. बारंबार मिस्टेक करे बारंबार भूल करी बारंबार सफर कला परे से रास्ता विषय जीव. बट मैन इज अ क्रीचर हु लर्न्स बाय हिमसेल्फ बिकॉज़ ही इज फ्रीडम. He is endowed with freedom. Thank you. Any other? से पचर दिले Freud. हाँ से पचर Freud कहिबे जे बापर झियो प्रति बेसी अफेक्शन मार पूर्वती अफेक्शन कारण कथा सेटा होची मार पूर्वती अफेक्शन ऑडिपियस कॉम्प्लेक्स और बापर झियो प्रति पूरा जीवन को फेयर दिला सेटा कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मा ये जेमति कहले इकोनॉमी टा सब कंट्रोल करूची. फ्रॉइड कहले इट इज जस्ट लिबिडो. I'll say one thing. Yes. But whatever Freud has said, many people misinterpret it. Freud has never said it with the relation of physical relation. No, I'm not. It's not to any physical. I understand. It is a psychological aspect that the father is attached to the daughter and the mother is attached to the Let son. him answer It is purely first. a psychological No, aspect. no, But many people Okay, misinterpret no, no, it as physical or something. Sister, I am ठीक not है, that. सुनो तो So सुनो I am not saying that. I am simply saying the psychology of man. You know, Freud का जो dream symbol उड़ा को, there are certain symbols. तब हम सापर symbol देखले. It is a interpretation of dreams. सेटा होची गोटे sexual symbol. तो ultimately it is a libidinal motivation, libido. टिके धर That actually determines that a basic motivation. The economic motivation टा कहले. किंतु मन रखि दांसु. That is actually false. There are also आपण देखंतु आपण गाँ को जातु अति गरीब स्त्री लोक से घरे आपण पसला माने से चाहते सब दे दो. गरीब तार तो ग्रीड अधिक रहा कथा. ग्रीड ता गरीब मान कर थाए ना धनी मान कर अधिक थाए. धनी मान को अधिक थाए बोले से माने ग्रीड चाहिए धनी है. धनी मान कर अधिक ग्रीड थिबार से माने इट इज नॉट दैट व्हेन यू डोंट हैव यू हैव ग्रीड. You have need but you have no greed. But here is a person who doesn't have a need but he has more greed.
ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାର ସେ ଗ୍ରୀଡ୍ ଟା ରିଇନଫୋର୍ସ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଇନଫୋର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଥିଲି ଓଜିଏସଟି ଆମର ଯୋଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନୁ ଚାକିରି କଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଆମେ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଚାନ୍ଦା କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଦରମା ପାଇଲେ କେହି ଦେବେନି ସେତେବେଳେ ୟୁଜିସି ସ୍କେଲ୍ କେତେ 740 ନା କେତେ ଥିଲା ସେ ଆରମ୍ଭ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଦେଇଦେବେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପଇସା ଥିବ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ନହେଇଥିବ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାରେ ସେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ହବ 3 ଫିଗର 4 ଫିଗର 5 ଫିଗର ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ ସେତେ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେମିତି ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମାର୍କ୍ସ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ରାଇଟ୍ କାରଣ ମଣିଷର ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭେରି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୋଟିଭେସନ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମଣିଷର 3ଟି ୱିକନେସ୍ ଥିବ ମଣିଷର ଅଧପତ୍ର 3ଟା ସକାଶେ ହେବ ଗ୍ରିଡ୍ ଫର୍ ମନି ସେକ୍ସ recognition hunger गोटे कथा कहया भूली गली फ्रीडम टा किंतु एनिमल वर्ल्ड रे मध्य ए बर्ड डजंट वांट टू बी केज्ड ए डॉग डजंट वांट टू बी फेटेड से फ्रीडम टा गोटे मंजीटे मध्य से ऊपर पळे आसी तार माने ओपनिंग अप करियो बे ता भीतर जो पोटेंशियल अछि तो फ्रीडम टा गोटे इज एम्बेडेड इन द नेचर ऑफ थिंग्स सब जिंस वांट टू फ्री दे वांट टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम द लिमिटिंग कंडीशंस जे चोपा भीतर है मंजीटा से बाहर आसीबो that is right. So Freud is right that it is one of the basic. It is not that all behavior is motivated by. There are people जो माने सब जिन सब गुडा छाड़ दे जंदे जब abnormal आपण त कहबे इन कंट्री ऑफ ब्लाइंड जेंदी ए पर्सन हैविंग आईज कॉल्ड abnormal एजीओएल से पढि दिबे आपण ठीक सही बोली तुम जो सोसाइटी रे आप जो सन्यासी मान देखबो केटे दुखी उड़ा हो संसार करले केते मजार वंचित हो गेले संसार करतांते पिला कळी तांते ये करतांते स्त्री संगे बोली थांते से माने होजनी ओडा किते घाटी होजदी नळा पको बळे खाली तार भीतर ओडुजदी हम कहउजदी आनंद पाउछ बोल बुझ परछन नै तनो से कहवा जाय देयर इज अ वेरी ग्रेट से मैडम यू माने जस्ट लिटिल वन सेंटेंस डायवर्स तो कथा अछि ए फ्रॉग इज डिस्टेंस बाय ए फ्रॉग वेल इज डिस्टेंस बाय स्पेस a summer bird is distance by time gote gore thia kiba gote frog ba whale frog ता सेटा ही तार जीवन से जाने बाहर गोटे समुद्र नदी अछि ता ते फ्री मूव कर परिबो स्पेस तक लिमिट कर डिस्टेंस बाय स्पेस लिमिटेड बाय स्पेस समर बर्ड जे समर रे आसे समर चली जाए से शीतर कोन होय कि वर्षा रे कोन जानि पारे नाही इट इज लिमिटेड बाय टाइम So we are also limited by our convictions and mane credibility. So communication gap, credibility gap, generation gap. तो जोड़े जिनसे सन्यासी कहीं सन्यासी होची कि तापे से सेक्स मोटिवेशन गोटे नाही तापे गोटे क्लियर चॉइस देला एते बडे सुंदर पिला से जाई गोटे मते एग्री कोन करि परतंदा किंतु अन्य जण पे विवाह परिवार जे नेचुरल तापे संसार छाड़ी दोडे से नेचुरल. सो द पॉइंट इज हमें कहि परिबा नाही अच्छा मदर टेरेसा के कोन थिला ये जो इतने बड़े काम करले ता भीतर कोन लिबिडिनल मोटिवेशन थिला. So there are many behavioral patterns which can be explained with least reference to this. Last है मार्क्स ये फ्रॉइड डार्विन अच्छा डार्विन कहले जो मनुष्य ये गोबर खतरू गोबर पको बार उनटे नकुडा हितबे मोर अनकाउंट हेड रो उकुडी बार गोटे घा को नसबा गले तादर पोक बार if uncleaned wound will give rise to microorganisms तल लाइफ तो मैटर आसला कि तो बड़ कथा हला लाइफ ता मैटर आसला केमिति जदि ऑलरेडी तार नथिला आर्गुमेंट इज लाइक दिस जदि सोरिस मंजी भितरे जदि तेल न थांदा ताले जेते घणा पेडिले मध्ये सोरिस रो तेल बाहरता नाही जदि जदि बाली की पेडिले के तेल बाहरुनी कारण बाली भितर तेल नाही बाली भितर तेल नथिबारु बाली तेल बाहर गने तो सोरिस दियरो सोरिस तेल बाहर जे कारण सम फॉर्म तादर अछि आज पॉसिबिलिटी तेनो लाइफ टा मैटर रो आसुची कॉन्शियसनेस टा मैटर रो आसुची इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन मैटर unless life is already there contained the possibility in matter how does it come out of it so was not did Darwin explain the jellyfish रो जो मैटर रो कॉन्शियसनेस आसुची तांकर संभावना आसला केमदी life comes out of it because it is already contained in it as a possibility जते विराट बरगछर संभावनाटा गोटे मंजी दियरु बाहरुची ठीक से भलिया
ଗୋଟେ ମଣିଷର ପସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ଜେଲିଫିଶ ଭିତରେ ଅଛି, that means the possibility of unfolding into higher and higher grades of consciousness is already contained in jellyfish. So matter contains the possibility of life, because এটা ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ଭଲରେ କହୁଛନ୍ତି।